नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरूद्रसंहितायाम् अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। अर्जुनोऽपि तदा तत्र दीप्यमानो व्यदृश्यत् मन्त्रेण शिवरूपेण तेजाक्षातुलमावहन्। ते सर्वे चार्जुनं दृष्ट्वा पाण्डवानिक्षयं गता। जयोऽस्माकं ध्रुवजातं तेजक्ष विपुलं यथा। इत्य कार्यं त्वया साध्यं नानयेन च कदाचन। व्यासस्य वचनाद्वाति सफलं कुरु जीवितम्। इति प्रोच्यार्जुनं ते वै विर्होत्सुक्यकातरा अनिच्छन्तोऽपि तत्रैव प्रेषयामासुरादरात्। द्रौपदी दुःखसंयुक्ता नेत्राश्रूणि निरुध्य च प्रेषयन्ती शुभं वाक्यं तदोवाच पतिव्रता। द्रौपदुवाच व्यासोपदिष्टं यद्राजस्त्वयां कार्यप्रयत्नतः शुभप्रदोऽस्तु ते पन्था शङ्करं शङ्करोतु वै। ते सर्वे संस्तत्र विसर्जयार्जुन मादरात् अत्यन्तदुःखमापन्ना मिलित्वा पञ्चेव च स्थितास्तत्र वदन्ति संश्रुतामृषिस्तम्। दुःखेऽपि प्रियसङ्गो वै न दुःखाय प्रजायते वियोगे निर्गुणं तस्य दुःखं भवति नित्यश। तत्र धैर्यधरस्यापि कथं धैर्यं भवेदिह। नन्दीश्वर उवाच कुर्वत्स्वेव तदा दुःखं पाण्डवेषु मुनीश्वर कृपासिन्धुक्ष स व्यास ऋषिवर्य समागता। त्वं तदा पाण्डवास्ते वै नत्वा सम्पूज्य चादरात् दत्त्वासनं हि दुःखाढ्य करो बद्धत्वा वचो ब्रुवन्। पाण्डवा ऊचु श्रूयतामृषभ्रश्रेष्ठ दुःखदग्धा वयं प्रभो दर्शनं तेऽद्य सम्प्राप्य आनन्दं प्राप्नुमो मुने। कियत्कालं वसात्रैव दुःखनाशाय न प्रभो दर्शनात् विपर्शे सर्वं दुःखं विलीयते। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तः स ऋषिश्रेष्ठो न्यवसत्स्तत्सुखाय वै कथाभिर्विविधाभिक्ष तद्दुःखं नोदयंस्तदा। वार्तायां क्रियमाणायां तेन व्यासेन सन्मुने सुप्रणम्य विनीतात्मा धर्मराजो ब्रवीदिदं। धर्मराज उवाच शृणुतमहं हि ऋषिश्रेष्ठ दुःखशान्तिर्मता मम। पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ कथनीयं त्वया प्रभो ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तक्ष कक्षन। वयमेव परं दुःखं प्राप्ता वै नैव कक्षन। व्यासुवाच राज्ञस्तु नलनामनो वै निषधाधिपते पुरा भवदुःखाधिकं दुःखं जातं तस्य महात्मना। हरिश्चन्द्रस्य नृपते जातं दुःखं महत्तरम् अकथ्यं तदिशेषेण परशोकावहं तथा दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्याप्यत् पाण्डवा यच्छ्रुत्वा स्त्रीनाराणां च भवेन्मोहो महतर। तस्मादर्ण्यतुं नैव शक्यते हि मया पुनः शरीरं दुःखराशिं च मत्वा त्याजं त्वयाधुना। येनेदञ्च धृतं तेन व्याप्तमेव न संशया। प्रथमं मातृगर्भे वै जन्मदुःखस्य कारणं कौमारेऽपि महादुःखं बाललीलानुसारि यत् ततोऽपि यौवने कामान् भुजानो दुःखरूपिणा गतागतैर्दिनानां हि कार्यभारैरनेकशा आयुक्षीयते नित्यं न जानाति ह तत्पुनः। अन्ते च मरणं चैव महादुःखमतः परं नानानरकपीडाक्ष भुज्यन्ते ज्ञानरैस्तदा। तस्मादिदमसत्यं च त्वं तु सत्यं समाचर येनैव तुष्यते शम्भुस्तथा तार्य नरेण च। नन्दीश्वर उवाच एवं विविध वार्ताभिः काल्यनिर्याणपनं तदा चक्रुस्ते भ्रातरः सर्वे मनोरथपथे पुनः। अर्जुनोऽपि स्वयं गच्छन् दुर्गाद्रेषु दृढवतः यक्षलब्धा च तेनैव दस्युनिधन्नेकश मनसा हर्षसंयुक्तो जगामाचलमुत्तमं। तत्र गत्वा च गङ्गायाः समीपे सुन्दरं स्थलम्
अशोककाननं यत्र तिष्ठति स्वर्ग उत्तम तत्र तस्थो स्वयं स्नात्वा नत्वा च गुरुमुत्तमं यथोपदिष्टं वेशादि तथा चैवाकरोत् स्वयम् इन्द्रियाण्यपकृष्यादो मनसा संस्थितोऽभवत् पुनक्ष पार्थिवं कृत्वा सुन्दरं समसूत्रकम् तद्ग्रे प्रणिधत्यो स तेजोराशिमनुत्तमं त्रिकालं चैव सुस्नात पूजनं विविधं तदा चकारोपासनं तत्र हरस्य च पुनः पुनः तस्यैव शिरस्तेजो निसंसृतं तचरास्तदा दृष्ट्वा भयं समापन्ना प्रविष्टक्ष कदाहयं पुनस्ते च विचार्यव्यं कथनीयं विडोजसे इत्युक्त्वा तु गतास्ते वै शक्रियास्यान्तिकं जसा चराऊचु देवो वाथ ऋषिशैव सूर्यवाथ विभावसु तपक्षृति देवेश न जानीमो वने च तं तस्यैव तेजसा दग्धा आगातास्तव सन्निधौ निवेदित चरित्रं ततीक्रियतामुचितं तु यत् नन्दीश्वरवाच इत्युक्तस्तक्षरे सर्व ज्ञात्वा पुत्रचिकीर्षितं सगोत्रपाण्यवसृज्यैव तत्र गन्तुमनो ददे सवृद्ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचारी शचीपति जगाम तत्र विप्रेन्द्र परीक्षार्थ हि तस्य वै तमागतं तदा दृष्ट्वा कार्षित्पूजाञ्च पाण्डवा स्थितोऽग्रे च स्तुतिं कृत्वा कायातोऽसि वदाधुना इत्युक्तस्तेन देवेशो धैर्यार्थं तस्य प्रीतिता परीक्षा गर्वितं वाक्यं पाण्डवं तं ततोऽब्रवीत् ब्राह्मणुवाच न वेव्यसि वैतात किं तपस्यसि साम्प्रतं मुक्त्यर्थं वाज्यार्थं कीस्वर्थैतत्पस्तव नदीश्वरवाच इति पृष्टस्तदा तेन सर्वं संवेदितं पुनः तच्छ्रुत्वा स पुनर्वाक्यम् मुवाच ब्रह्माणस्तदा ब्रह्मनुवाच युक्तं न क्रियते वीर सुखं प्राप्तुं च यत्तपा श्राद्धधर्मेण क्रियते मुक्त्यर्थं कुरु सतम् इन्द्रस्तु सुखदाता वै मुक्तिदाता भवेन हि तस्मात् त्वं सर्वथा श्रेष्ठ कर्तुमर्हसि सत्तपा नन्दीश्वरवाच इदं तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधं चक्रे जनुस्तदा प्रत्युवाच विनीतात्मा तद्नादृत्य सुव्रत अर्जुनवाच राज्यार्थं न च मुक्त्यर्थ किमर्थं भाषसे त्विदं व्यासस्य वचनेनैव क्रियते तप ईदृशं गच्छ ब्रह्मचारिन्मा पातयितुमिच्छसि प्रयोजनं किं त्रास्ति त्ववै ब्रह्मचारिणा नन्दीश्वरवाच इत्युक्त स प्रसन्नो भूतसुन्दरं रूपं दुतं स्वोपस्करणं संयुक्तं दर्शयामास वै निजं शङ्कररूपं तदा दृष्ट्वा लज्जितक्षार्जुनस्तदा स इन्द्रस्तं समाक्षास्य पुनरेव वचोब्रवीत् इन्द्रवाच वरं वनीष्व हेतात धनञ्जय महामते यदीच्छसि मनोभीष्टं नादेयं विद्यते तव तच्छ्रुत्वा शक्रवचनं प्रत्युवाचार्जुनस्तदा विजयं देहि मेतात शत्रुक्लिष्टस्य सर्वथा शक्रुवाच बलिष्ठा शत्रुवस्ते च दुर्योधनपुरासरा द्रोणो भीष्मक्षकर्ण अक्ष सर्वे ते दुर्जया ध्रुवम् अक्षत्थामा द्रोणपुत्रो रौद्रोषो दुर्जयोति स मया साध्या भवेयुस्ते सर्वथा स्वहितं शृणु एतद्वीरं जयं कर्तुं नाशक्त कक्ष्णाधुना वर्तते हि शिवो वर्यस्त स माच्छम्भोर्जपोधुना शङ्कर सर्वलोकेश राचर्पतीश्वराट् सर्वं कर्तुं समर्थोऽस्ति भुक्तिमुक्तिफलप्रदा अहं मन्ये च ब्रह्माद्या विष्णु सर्ववरप्रद अन्यजगीष्वो ये च ते सर्वे शिवपूजका अद्य प्रभृति तन्मन्त्रं हित्वा भक्त्या शिवं भजा पार्थिवेन विद्यानेन ध्यानेनैव शिवस्य च उपचारनेकैक्ष सर्वभावेन भारता
सिद्धि स्याद चलातैध्य नात्र कार्या विचारणा। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा च चरान् सर्वान् समाहूय ब्रवीदिदं सावधानेन वैस्थेय मे तत्संशरणे सदा। प्रबोध्य स्वचरानिन्द्रो अर्जुन संरक्षणादिकं वात्सल्य पुरंहृदये पुनरुचे कपिध्वजम्। इन्द्रुवाच राज्यं त्वया प्रमाद्वादेन कर्तव्यं कदाचन। श्रेयसे भद्रविधेयं भवेत् तव परन्तप। धैर्यं धार्य सात्केन सर्वथा रक्षका शिवा। सम्पत्तिक्षफलं तुभ्यं दास्यते नात्र संशय। नन्दीश्वरवाच इति दत्त्वा वरं तस्य भरतस्य सुरेश्वरा। समरञ्छिव पदाम्भोज जगाम भवनं स्वकम्। अर्जुनोऽपि महावीरा सुप्रणम्य सुरेश्वरं। तपस्तेपे संयतात्मा शिवमुद्दिश्य तद्विधम्। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुसहितायां किरातावतारवर्णन प्रसंगे अर्जुनतेपोवर्णन नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः।